बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर आपको भी लंबा सफ़र, खिड़की वाली सीट, सरसब्ज़ मैदान, जंगल, दरख्त, आबशारें, झीलें, बर्फ़पोश पहाड़, ठंडी रातें, पानी में चांद का अक्स, खामोशी और अकेले रहना पसंद है तो आप मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ किसी भी जगह को घूमने के लिए आपको चाहिए कि आप वहाँ 2 से 3 दिन गुजारें, ताकि आप उसको अच्छे से फ़ील कर सकें। आप देख सकें कि सूरज वहाँ कैसे निकलता है और रात को चाँद कैसा लगता है। मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाके अपने लिए खुद एक कप चाय बनानी चाहिए। जो सुकून आपको उससे मिलेगा वो किसी भी होटल की चाय से नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने थोड़ा अलग रास्ता चुना और कैंपिंग का फ़ैसला किया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूं और नेचर को फ़ील कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा मैं कम से कम बोलूं, ताकि आप नेचर को फ़ील कर सकें, आप वो देख सकें जो आप यहाँ देखने आए हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने पे मजबूर किया। आज हमारी मंजिल है शंदूर पास, जहां हम एक रात स्टे करेंगे, अपनी कैंपिंग और कुकिंग करेंगे। हमारा सफ़र शुरू होगा भूनी चित्राल से, जहां से हम मस्तूज पहुंचेंगे, मस्तूज से लासपुर और लासपुर से फिर शंदूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यह है लासपुर, चित्राल का आखिरी गांव, जो कि शंदूर से 30 मिनट दूर है। आप चित्राल से शंदूर जाएं तो आपको आखिरी गांव लासपुर मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पर आपको कैंपिंग पोट्स की सहूलत भी मिलेगी। ये इतना खूबसूरत गांव है कि मैंने यहाँ एक रात रुकने का फ़ैसला किया, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से शंदूर जाऊँगा, ताकि मैं जाके सुबह टाइम से अपनी कैंपिंग कर सकूँ। आज रात हम यहाँ रुकेंगे और कल अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद आमिर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ शंदूर पास, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ हम एक रात स्टे करेंगे, अपनी कैंपिंग और कुकिंग करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको रात किस तरह से हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे और क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएँगे और सनसेट भी आपको दिखाएँगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई होगी। अभी यहाँ पे रात के 10 बज रहे हैं और दिन को मौसम बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था और ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक टेंट के अंदर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन शायद लेट नाइट और ज़्यादा सर्दी बढ़े। अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। सुबह इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग उठना है। आपको इंशाल्लाह ड्रोन के शॉट भी दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम शंदूर पास। मेरी रात बहुत ही खूबसूरत गुजरी। रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कंफर्टेबल सोया। मैंने पूरी कोशिश की और अभी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखा सकूँ जो आप यहाँ देखने आए हैं। पर जो मैंने यहाँ फ़ील किया उसके लिए आपको ना तो मैं वो बता सकता हूँ और ना ही वो दिखा सकता हूँ। उसके लिए आपको ख़ुद आना होगा और यहाँ आके एक रात स्टे करना होगा और इसको फ़ील करना होगा। शंदूर बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ कम से कम एक रात स्टे करें और इसको एक्सप्लोर करें और ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर शंदूर आएँ, ताकि आप देख सकें कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। अभी मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बोटिंग करूँगा, जिसका मुझे बहुत शौक़ है, ताकि मैं झील को अंदर से देख सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। मैं शंदूर आउट सीज़न में आया हूँ, इसलिए आपको यहाँ ग्रीनरी और बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको ग्रीनरी और बर्फ़ दोनों मिलेंगे, जो शंदूर की खूबसूरती को चार चाँद लगाते हैं। अगर आप शंदूर का हुस्न देखना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अगस्त के महीने में आएँ।
मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। हमारी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत है। इसीलिए हमें सफ़र को एंजॉय करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एक मुसाफिर की तरह गुजारना चाहिए। मेरी अगली मंजिल होगी फंदर वैली। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी मुलाकात होगी फंदर वैली में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।